Hello my beautifuls. Today I am going to share with you this gorgeous makeup look. आप देख सकते हो आज मैंने एक कट क्रीज आई मेकअप क्रिएट किए हैं. इसके आज मैं आप लोगों को इन डेप्थ ट्यूटोरियल दिखाऊंगी. सो आज ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा. सो लेट्स स्टार्ट वाचिंग. Creating my eye base by pack derma concealer with a damp beauty blender. Juvia Place Masquerade Palette से ये पिंक शेड लेकर मैं पहले अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी. मैं इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी, जस्ट इसको टैप टैप करके आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी. उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं ये ब्राउन कलर को अपनी क्रीज पर थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूँगी. देन टेकिंग दिस सेम कलर एंड इसको मैं क्रीज पर ज़्यादा करके अप्लाई कर लूँगी क्योंकि इसके ऊपर ही कट क्रीज होगा. By this color and a fluffy blending brush मैं क्रीज के जो कलर है उसके जो एजेस है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि क्लीन लुक दिखे. And now here is the trick for cutting the crease. मैं पहले लाइनर की तरह हाफ लिड पर एक कंसीलर को अप्लाई करूँगी. फिर ऊपर देखूँगी तो ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाएगा. उसके बराबर मैं लिड को फिल कर लूँगी. एज ए कंसीलर मैं वो सेम पैक डर्मा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. देन दिस टर्किश शिमरी कलर इसको मैं फिंगर की मदद से पहले लिड की सेंटर पर अप्लाई करूँगी. देन एक फ्लैट ब्रश की मदद से जो कॉर्नर्स है उसको फिल करूँगी. एंड इस शिमर कलर को मैं इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी. सेम पिंक कलर को मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से दोबारा अप्लाई करूँगी. फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन एक वेट वाइप की मदद से मैं आइज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी. टुडे आई ऑलरेडी प्रेप एंड प्राइम माई स्किन. सो मैं मेकअप रेवोल्यूशन गोल्डन हाइलाइटर को फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी फिंगर की मदद से.
As a foundation, I am using Nykaa Skin Genuine Stick Foundation shade 02. फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से मैं फाउंडेशन को अच्छे से फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। आज मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल नहीं करूँगी। For cream highlighting, I am using the same pack derma concealer in the shade ivory. मैं ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द प्रोडक्ट्स। एंड आप चाहे तो ये लुक दोबारा क्रिएट करके आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हो। मैं अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूँगी। एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आज मैं फेस को क्रीम कंटूरिंग करूँगी। फॉर कंटूरिंग आई एम यूजिंग एलिया गर्ल कंसीलर इन द शेड मेहगनी। देन एक लूज़ पाउडर की मदद से मैं थोड़ा सा ही लूज़ पाउडर लूँगी, फिर उसका अंडर आइज एंड मैं टी जोन को
सेट कर लूँगी और मैं जहाँ कंटूरिंग की है उसके नीचे लूज पाउडर की मदद से 2 लाइन ड्रॉ करूँगी। अंडर आई में मैं इस कलर को एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी। देन एक पेंसिल ब्रश की मदद से सेम पिंक कलर को अप्लाई करूँगी। For blush, I am using the same pink color which I applied on my eyes. For eyeliner, I am using Maybelline gel liner. हाउ आई क्रिएट माई विंग लाइनर, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। For setting spray, using NYX setting spray, and for highlighting I am using MAC Soft and Gentle highlighter, my all-time favorite highlighter. By this highlighter मैं अपनी इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। For lipstick, I am using this nude mauve color. I think this color will go perfectly with this look. And this is the final look, guys. Hope you all enjoyed this tutorial. And please like, comment and subscribe. This means a lot for me. Bye bye. Love you.